Now it is started. Yeah, ma'am, it is started now. Okay, ma'am. Recording. Yeah. Data Can you I make press. us the yeah. Okay, done. Okay, ma'am. ठीक है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना जुपिटर नोटबुक? हाँ दिख रहा है. Yes. I will start now. ठीक है, मैं थोड़ा रुकता हूँ 2 मिनट रुकता हूँ, जो भी ज्वाइन कर रहे थे लोग भी ज्वाइन. I will start at 10:15. एंड पारस को ग्रुप पे भी डाल दें जिनको करना था खुद पर ज्वाइन करना है. सो बिफोर द ब्रेक सेशन वी कैन हैव द फिर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पार्ट. Yeah. Paris today take screenshot, huh? Yeah, ma'am. Yeah. The end of the नहीं lecture. किया तो चलेगा वीडियो ऑन. सिर्फ नयन you will start the video. Okay. Your camera, sorry. आ ही रहे तो कर लेने दो, मैं भी देख लूँ सबका है. Why only 39 participants are there? Should I start? Yes. Okay, so आज का टॉपिक मुझे pandas. So basically अगर मैं बोलूँ तो pandas is like an Excel sheet only. You have a rows and you have a column as a data section, and then you have the power of Python as well. So for example, rows or columns तो रहता ही है as usual, but what you can do is it gives an easy to use data structure, and data analysis में pandas is very popularly used. So कुछ भी use करना रहेगा, जैसे you have a time series data, बहुत सारा data है, you have to perform some kind of aggregation वगैरह. So it's like you have Excel का वो thing. You have like an Excel sheet, the Excel sheet on steroids you have basically. So you can have lots of functionality. You can have Python ke whatever tools you want to use, you can use with pandas. Or pandas by default has a lot of functions that we are going to explore. We are going to do is going to see an overview of pandas. क्या होता है, क्या basically what you can do, and then I can share you some resources as well. So today I will be giving an overview. But if you want to in depth you want to see, then I will share some video lectures, you can see them, and they are based on different case studies. So like case study wise how you perform, giving an overview. There are lots of things in pandas that you can do. For example, you have data aggregation. Like data aggregation में for example you have sum or you want to average वगैरह. So it's like as a core structure pandas में जो भी रहता है core library that is numpy only. So numpy का function pandas का backend पूरा numpy पे ही बना रहता है, and it uses even matplotlib ये भी रहता है graph वगैरह. तो graph वगैरह भी बनाना you can use this pandas. It's a very popular tool in this. It's a BSD license library, you can known as that. So it's a free license library, anybody can use. So ये है for example, and then you have data transformation. Data transform in the sense you have, अगर समझो मेरे पास एक ये है मेरे पास एक एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट को मुझे कन्वर्ट करना है, यू कैन यूज इट फॉर ऐसा HTML में यू कैन कन्वर्ट इट, देन यू कैन ऐसा जेसन करके रहता है. फॉर एग्जाम्पल इन क्लाइंट सर्वर में देर इज फॉर्मेट दे एक्सचेंज यूजिंग जेसन, they communicate. So dictionary you can JSON is actually like a dictionary only. जैसे Python में you have a dictionary, JSON is JavaScript object notation. So dictionary is very similar to JSON. So you can assume dictionary, assume and client server पे they used to communicate this. So what some people do is use ये data conversion इतना easy रहता है ना इसमें. Some use pandas only to convert one data to another, बाकी कुछ नहीं करता है. So that is very useful. The data cleaning and adaptation is very important because जब भी you have data analysis,
इवन इन मशीन लर्निंग जो भी एप्लीकेशन रहते हैं, द डेटा एक्वायर करना, डेटा क्लीन करना इज द मोस्ट हेडेक पार्ट. उस पर फिर एनालिसिस, द स्टैंडर्ड एल्गोरिथम कौन सा लगाना है इज अ डिफरेंट टेक, बट वो एक बार हो जाता है. बट डेटा क्लीनिंग एंड ऑल इज द मोस्ट ऐसा हेडेक वाला थिंग कि क्या किधर करना है, कौन सा डेटा करना है. सो pandas is very extensively used, and अभी तो ओवरव्यू करेंगे, but in depth knowledge of pandas will help you to clean the data set, which is the first step, and then you can have some like knowledge discovery from the data. So clear data cleaning is very useful. Manipulation of data set is simple. You can have one data section, then you can do something in that data section only. You can perform different kind of operation and do it. अभी selection of data according to definable criteria. For example, if I have a column जिसमें age 50 है, I want only the data जिसका age 50 से ज़्यादा है. So what I will do is I will make a write a criteria कि ये criteria है उसमें. जैसे numpy में भी देखा था अपन ने, indexing किया था अपन ने. So in that what you can do is you can simply ऐसा कुछ भी index वगैरह करना है तो कर सकते हैं. एक particular criteria you can define कि ये particular criteria में ही मुझे data ये होगा. अपना ये वाला ही डेटा चाहिए मुझे, और कुछ डेटा नहीं चाहिए. सो यू कैन डू दैट एज वेल. देन व्हाट यू कैन, एक है ना, हाँ. देन व्हाट हैपेंस इज यू कैन फिल्टर फंक्शन भी सेम. You can filter out the data according to the criteria as mentioned. And there is known as time series. Time series is a bit advanced topic. I won't be covering it today, but time series basically एक particular interval of time से what time पे data है, and then accordingly you want to manipulate something. So time series is a very popular notation. अगर डेप्थ में जानना है तो आई विल शेयर द वीडियो लेक्चर्स. इसमें इन डेप्थ डिस्कवर टाइम सीरीज वगैरह क्या होता है, कैसे वगैरह. यू नीड लॉट ऑफ थिंग्स टू नो बिफोर यू कैन जंप टू टाइम सीरीज, बट it is very popular use. Then splitting of large amount of data into smaller. So कुछ पर्टिकुलर चंक ऑफ डेटा पे मुझे देखना है कि क्या करना है. जैसे यू हैव हेड और टेल एंड pandas. So pandas में want to see not the whole data, I want to see a particular amount of data only, so you can use them and you can have जैसे slicing करते हैं list वगैरह में, वैसे in pandas also you can perform the slicings. And then you have the handling of missing data. That is, for example, you have some जब रियल लाइफ डेट में देखते हैं. So for example, there are very popular this available data sets available, such as the Titanic का एक data set रहता है. There is a Pokemon का data set, different data set. Then Titanic के अंदर airplane crash करके भी एक रहता है data set. There are different kind of data. So when you see the real life data set, उसमें क्या रहता है, you don't have clear का data. उसमें क्या रहता है, कुछ कुछ फील्ड्स मिसिंग रहता है, तो उसमें खाली एम्प्टी डेटा रहता है. तो यू कैन परफॉर्म, तो देर आर डिफरेंट ऑपरेशन. जैसे यू कैन एवरेज इट आउट, जो भी डेटा है उसका एवरेज ले सकते हैं. यू कैन परफॉर्म अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन. मीडियन लेना, मीडियन ले सकता है. So based on your statistical knowledge, you can have different parameter set and to handle such type of missing data. So by default, missing data is represented as not a number, NaN करके आता है. Even if you're from JavaScript वगैरह, you must have seen ऐसा NaN not a number करके लिख के आता है. So this is a very high overview of what is pandas and all. Then let's see क्या होता है. So अभी किसी का import pandas as PD करके. Pandas is popularly referred as PD. So it's a popular convention to do. ये import में अगर error आता है तो as usual you will have to, this is external library, this is not the default library, so you will have to from Jupyter, if you want to install, you have to use the magic this exclamation pip install pandas. अगर terminal से करें तो simply write pip install pandas, then you will be able to import this. So ये import करो pandas and let's hope कि कुछ error नहीं आए तुम लोग को. So you can do this and then I can see the version as well. So अभी मैं समझो इसमें I'm using the 1.2.5. You can use any version. Most probably अपने को syntax का error नहीं आना चाहिए. Let's hope for that. So, give it 2 minutes. If you don't have it set up, you can set it up, and then I will continue at 10:24. So yeah. And by the way, किसी को कुछ assignment related जो मैंने दिया उसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो यू कैन आस्क मी. ऐसा सोल्यूशन में पूछ लेना सीधा. कुछ क्वेश्चन में डाउट हो तो ही पूछना, बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्कस इट राइट नाउ द सोल्यूशन. So if you have any doubt, you can ask me right now also. If you want question, you could be doubt.
अमन LRU कैश मेथड में मतलब क्या नहीं समझा मैं, Can you unmute? हाँ मतलब कैसे यूज करते हो मेथड, मतलब क्लास के अंदर करते हैं कि बाहर करते हैं वो नहीं समझा। नहीं, वो फंक्शन जो डिफाइन करेंगे ना, समझ अगर तूने डिफाइन किया फिबोनाची का, तो उसके ऊपर ही यू इंपोर्ट फ्रॉम फंक्शन इंपोर्ट LRU कैश, एंड उसके ऊपर ही @LRU अंडरस्कोर कैश लिख सकता है तू, एंड उसके ब्रैकेट में यू कैन पास द पैरामीटर जितना साइज चाहिए। सो यू कैन एक्सपेरिमेंट ऐसा अलग अलग साइज लेकर। अब मैक्स साइज इक्वल टू 2 लिया तो क्या कैसा परफॉर्मेंस आता है, इक्वल टू 3 लिया तो क्या परफॉर्मेंस आता है, यू कैन चेक इट आउट। अच्छा ओके 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 थैंक्स। वो यू कैन रेफर, ऐसा मैंने जो भी पहले दिया था ना LRU कैश, मैंने दूसरे चीज़ के लिए भी यूज़ किया है ये फंक्शन के ऊपर। सो वो PDF अगर यू वांट टू रेफर, यू कैन रेफर, जैसे पुराने में किया है। यू माइट ऐसा थोड़ा क्लोजर वाला भारी गया था, सो यू माइट वांट टू रेफर द PDF। सो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना था LRU का, सो फिर वन ऑफ यू वाज द बेस्ट टाइम। सो या एंड चेक इट आउट। बाय द वे आई एम गेसिंग किसी को PD का एरर नहीं है, इंपोर्ट वगैरह चल रहा है। आई विल कंटिन्यू फर्दर। या So अभी by default समझो in pandas you what you create is a data frame, जो भी अपन create करते हैं ना वगैरह, that is known as a data frame. So अभी data frame is basically क्या है, मेरा एक रहता है रोज रहता है, कॉलम रहता है, that is known as data. For example अभी मैंने PD import किया, I have a data, समझो मेरे पास एक data है list करके मैं, so I have 22, then I have 23, then I have 24, then I have 25 for example, and make data frame. DF बहुत common notation है, you will be seeing it often. So PD dot data frame किया मैंने समझा, and if I pass data and let me see, अगर DF किया मैंने खाली तो क्या आता है। so ये क्या किया मैंने, पांडास में PD से रेफर किया, डॉट डेटा फ्रेम करके एक रहता है इसमें मेथड, तो मेथड में मैंने डेटा पास किया, एज अ लिस्ट मैंने पास किया इनिशियली, एंड देन आई प्रिंटेड DF। सो उसने क्या किया, मैंने अभी तक कॉलम नेम स्पेसिफाई नहीं किया उसने, तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, मेरा कॉलम को 0 कर दिया, एंड रोज तो बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 करके इंडेक्स होते हैं बाय डिफॉल्ट इन पांडास। सो ये क्या किया इसने मुझे एक बना के दिया, कॉलम रो कॉमा कॉलम बना के दिया, एंड देन आई वुड वो लिस्ट को उसने कन्वर्ट कर दिया डेटा फ्रेम में। सो इफ आई print the type of this df, let me see। तो इसमें क्या आ गया, एक डेटा फ्रेम करके देयर इज अ क्लास इन pandas, वो उसने बना के दे दिया मुझे। सो दिस इज वेरी सिमिलर टू योर दिस अपना जो भी माय टीम्स, अपना सॉरी टीम्स क्या, ये एक्सेल में जैसे रहता है रोज कॉलम वगैरह। तो दिस वाज अ सिंगल इंस्टेंस, जैसे एक ही मैंने डेटा पास किया उसमें किया। अभी फॉर एग्जांपल इफ आई वांट अ स्पेसिफिक कॉलम नेम चाहिए मुझे, so what you can do is data equal to, मैंने same copy, I will copy it same, then what I can do is I can simply pass it a column करके I can pass the column, specify the this name of the column, and I try to print it। तो उसने क्या किया, by default इसने number करके मुझे बना दिया column का। so if I don't specify anything I will get the by default the notice 0 1 2 करके आ जाएगा। or else what you can do is you can specify the name of the column and you can do this। so that is one thing। yeah, so if you want you can ये column हटा के you can copy it down and without column, and you can try it out। ये this is one method, I will be exploring more methods। नयन वो डेटा फ्रेम केस सेंसिटिव है। ये केस सेंसिटिव है। you can copy this down and give it 2 minutes, छोटा सा ही है, you can copy, you can make a distance pen, then I will show other methods how you can create a data frame।
नयन एंड व्हाट अबाउट रोज रोज को अगर अल्फाबेट्स से रिप्रेजेंट करना हो या फिर रोमन रोज को यू कैन मैं बताता हूँ इसको डॉट इंडेक्स करके एक मेथड रहता है आगे देन आई विल शो इट टू यू df डॉट इंडेक्स करके रहता है तो यू कैन स्पेसिफिकली असाइन सो आई विल शो इट टू यू इन आगे की एग्जाम लेट मी फिनिश द कॉलम देन आई विल कम टू रोज ओके या I hope you are done. So I will continue. अभी ये इसमें खाली क्या था मैंने एक लिस्ट डाला लिस्ट में पास द नंबर्स फॉर एग्जाम्पल ये तो मेरा लिस्ट था अभी समझो मैंने एक लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाया फॉर एग्जाम्पल दिस मैंने ये इसमें क्या सिंगल वैल्यू ऐड किए थे तो आई वांट टू ऐड मल्टीपल वैल्यू फॉर एग्जाम्पल आई हैव सब्जेक्ट मैथ्स कॉमा यू हैव द स्कोर 65 करके देन यू क्रिएट वन मोर सब्जेक्ट देन यू हैव इंग्लिश then you have 75 and then you have science for example you have the marks 70 मुझे क्या चाहिए मुझे इसको ये चाहिए ऐसा ही चाहिए एक सब्जेक्ट आ जाना चाहिए एक मेरे मार्क्स आ जाने चाहिए बाय डिफॉल्ट एंड आई नेम द कॉलम्स एज वेल सो इफ आई pd डॉट डेटा फ्रेम मैंने किया दिस इज केस सेंसिटिव एंड आई पास द डेटा पहले एंड देन बाय कॉमा आई स्पेसिफाई द कॉलम्स equal to I specify the subject पहला heading subject क्योंकि this matches ये sequence में जाएगा subject लिया and then I perform the marks लिखा and then I try to print it df so df आ गया मेरा 65 75 70 करके आ गया जो भी marks है तो ये sequence में आ गया and if I इसमें भी d type if I type float सो इसमें बाय द कोर्स नहीं आएगा जैसे नंपाई में होता है यू टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ये बाय डिफॉल्ट ये इसमें कर देगा कन्वर्ट करके दे देगा नंबर को स्पेसिफाई एंड यू प्रिंट इट आउट यू गेट दिस सो दिस इज व्हाट लिस्ट ऑफ लिस्ट मेथड लेट मी टाइप सिमिलरली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऐसा एक डिक्शनरी में पास करना तो पास कर सकते हैं सो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव डेटा इक्वल टू आई हैव मैंने इधर ही कॉलम का नाम स्पेसिफाई करके जैसे सब्जेक्ट मैंने किया देन आई पास द लिस्ट मैंने क्या किया मैथ्स किया स्पेसिफाई देन आई स्पेसिफाई साइंस करके है क्या एंड व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट वन मोर ऐसा दिस एक और एक की लिख दिया मार्क्स का एंड आई स्पेसिफाई अगेन दिस 65 कॉमा 75 कॉमा 70 करके कर दिया मैंने समझा एंड इफ आई ट्राई टू मेक अ डेटा फ्रेम सो pd डॉट डेटा फ्रेम यू पास द डेटा ये भी इसने ये किया सो आई कैन पास अ लिस्ट ऑफ लिस्ट एंड देन आई राइट द कॉलम मैन्युअली व्हाट यू कैन डू इज सीधा यू स्पेसिफाई द की तो की वो बन जाएगा कॉलम एंड बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज़ है इसके की के जो भी वैल्यूज़ है वो अपने आप आ जाएंगे कॉलम पे अपने आप अपेंड हो जाएंगे एंड यू प्रिंट इट आउट df करके सो यू विल गेट द डेटा फ्रेम सो दिस इज नोन एज डिक्शनरी ऑफ लिस्ट मेथड यू कैन कॉपी दिस वन टू वन दिस इज द बेसिक ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक डेटा रहेगा उस पर यू कैन मेक द डेटा अगेन आई विल गिव यू 3 minutes you can I will give you 4 minutes you can copy this one you can experiment अलग अलग करके for example अगर मैंने इसको ज़्यादा कर दिया so what happens it gives an error
बिकॉज वो मैच होना चाहिए एक एक करके, तो सेम नंबर होना चाहिए, तो यू कैन एक्सपेरिमेंट अलग टाइप का, यू कैन ट्राई टू गेट एन एरर। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे नहीं पता क्या मार्क्स चलना है, तो देर इज अ, जैसे मैं 9 बोला था नॉट अ नंबर करके, सो यू कैन हैव नंपायर। अभी समझो मैं ज्योग्राफी के मार्क्स नहीं पता क्या है, you can just यहाँ पे np.nan करके फिर specify, so you will get a not number here, nan करके आएगा। So this is if you just want to explore, not a number आ जाता है by default specify नहीं करते, you get a not number करके। So yeah, I'll give you 5 minutes, you can copy this down, you can explore it, and then I will continue again. मिहिर तूने numpy इंपोर्ट किया कि नहीं? हाँ किया। और तो तेरा एरर तो डाल सकते चैट बॉक्स में भी।
मिहिर, हेलो। हाँ, कैन यू पुट इट इन द चैट बॉक्स? जो भी एरर तो जा रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ, हेलो। तूने लेंथ वेरी किया है, आई गेस। तूने सेम नहीं रखा रहेगा, तो एनपी डॉट नैन का इशू नहीं है। दिस इज लाइक, समझ, इधर मैंने 4 सब्जेक्ट रखे, तो यू हैव टू पुट 4 वैल्यूज ऑन। अगर एक कम एक ज़्यादा किया तो यू विल गेट एन एरर। दिस इज मोस्ट प्रोबेबली द लेंथ का एरर। एरे मस्ट बी ऑफ सेम लेंथ, तो लेंथ अलग ज़्यादा रहेगा। इट्स नॉट द एनपी डॉट नैन का एरर नहीं है ये। 3 वैल्यू डाले हैं। तूने क्या सब्जेक्ट्स कितने रखे हैं? 3 और ये कितने डाले? मार्क्स कितने डाले? मार्क्स के 3 ही डाले। तो कोड भेज सकता है प्लीज? चैट बॉक्स में कोड डालना तेरा। हाँ हाँ। मिहिर सुन, देख, तू जब भी ये बनाता है ना, डिक्शनरी बनाता है ना, और सब्जेक्ट्स और मार्क्स लिखता है ना, तो तुझे कॉलम नहीं स्पेसिफाई करना रहता। ये वो बाय डिफॉल्ट है ना, कॉलम उठा लेता है। जो कीज़ है ना तेरा, ये देख, ये जो कीज़ है ना, वो कीज़ उठा लेता है, खुद ही बना देता है उसको कॉलम। तो यू डोंट हैव टू स्पेसिफाइड कॉलम्स अलग से, तो इसके वजह से मोस्टली एरर आ रहेगा। तो यू कैन ऐसा वो कॉलम हटा के देख क्या आता है। It's not showing error in the columns करके I can get the same thing overwrite हो रहा है। yes dot pandas subject comma marks पे ही दे रहा है, डेटा करके लिया सब्जेक्ट लो 3 4 है वैल्यू। सब्जेक्ट में तूने कम डाला है बाय द वे। हियर कैन यू अनम्यूट? यस। सब्जेक्ट 3 डाले हैं, मैथ्स साइंस और हिंदी डाला तूने और एक वैल्यू भी। हेलो, ओके या तूने 4 सब्जेक्ट, ओके। तूने देख वैल्यू 4 लिखा ना, 43 45 67। सो नहीं, जो नहीं कॉलम फर्स्ट लाइन ओवरराइट कर दिया उसने। 4 सब्जेक्ट डालेगा तो द एरर शुड गो। ओके। सो या ये दिस वाज एन इशू, सॉरी फॉर दैट। इसका इशू था। या आई विल कंटिन्यू आगे। तो ये कैसे लिया था अपन ने? डिक्शनरी ऑफ लिस्ट लिया था, उसमें आ गया। तो बाय डिफॉल्ट ये उठा लेता है। एंड इफ आई कंटिन्यू, फॉर एग्जांपल इफ आई मेक अ न्यू
डिक्शनरी फॉर एग्जाम्पल में नेम्स डाला मैंने, नेम्स में फॉर ट्राई टू डू दिस, मैंने समझो मैंने नाम डाले, आई विल राइट 6 नेम्स हियर, और जैसिका करके, if I write Mary, John, and you can perform Mel करके एक नाम दे दिया, and then you have Max. Then you have ऐसा birthdays करके you have some. Birthdays में if I will just put the years. For example 1968 करके डाल दिया, then 19 करके, then you have 1970. 1973, 1 2 3 4 5 6, ओके आई विल रिटर्न करके देखता हूँ, डी डाला मैंने, एंड देन यू हैव डी एफ इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम किया मैंने पास द डी, एंड देन डी एफ प्रिंट किया, सो यू गेट दिस नेम्स ऑफ बर्थ डेट्स आ गया, एंड इफ आई मैंने अगर डी एफ किया, डी एफ में इफ आई पुट द डी एफ डॉट हेड, तो ये क्या कर रहा है, अभी मेरे पास 6 वैल्यूज़ है, 0 से लेके 5 तक, दैट मीन्स 6 वैल्यूज, सो इफ आई राइट जस्ट द हेड, तो दिस विल गिव मी ओनली द फर्स्ट 5 वैल्यूज, तो अभी तो मेरे पास 6 ही वैल्यूज है, डजंट मेक एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस, 5 है कि 6, बट इन व्हेन यू आर वर्किंग ऑन लार्ज डेटा सेट, जैसे पोकेमॉन करके डेटा सेट देयर में 1000, देन यू हैव टाइटैनिक, वैसे 10,000 है, बहुत सारा बड़ा डेटा रहता है, तो यू डोंट वांट कि पूरा डेटा ऐसा पढ़ ले सर, सो यू जस्ट वांट टू सी द टॉप वैल्यूज ऑफ, फॉर एग्जांपल मैंने हेड डाला, तो यू जस्ट अगर मैंने 2 पास किया, समझो पैरामीटर पास किया, तो यू विल गेट दैट मैनी एलिमेंट्स, तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है वो 5 ही बाय डिफॉल्ट 5 करता है, तो हेड में बाय डिफॉल्ट जो भी टॉप 5 वैल्यूज रहते हैं वो प्रिंट होते हैं, तो 0 से लेकर 4 तक, इफ आई पुट 4 आई विल गेट द सॉरी 3 डाला तो 0 से लेकर 2 तक, इफ आई पुट 4 देन यू गेट 0 से लेकर 3 तक, सो बाय डिफॉल्ट 5 रहता है, सो सिमिलरली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज द df डॉट टेल करके, कमेंट दिस आउट, बाय टेल क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जो भी लास्ट के एलिमेंट्स है ना, लास्ट के जो 5 एलिमेंट है वो डालेगा, प्रिंट करेगा, सो इफ आई पुट दिस, सो ये लास्ट का एक एलिमेंट दिया है, इफ आई डू 2, so I will get the last के 2 elements. So head and tails are popularly used, जो भी ऐसा एक मुझे रफ आइडिया चाहिए मेरा डेटा सेट कैसा दिख रहा है वगैरह, तो you usually you typically use the head or tail method to see what kind of data you have, what kind of columns you have. So for that you can use, and for example if I want to see मेरे columns क्या है, you can get the columns can you have the data types of object, so names and birth dates करके आया मेरे पास, so and if you want to see the index मेरा क्या है, तो इंडेक्स का ये क्या है, 0 से चालू हो रहा है, स्टॉप है 6 मतलब मेरे पास 5 तक ही है, 0 से लेके 5 तक, तो प्रिंट डी एफ करके, तो प्रिंट, सो यू गेट 0 से लेके 5 तक होनी गए, तो इंडेक्स क्या करता है, गिव्स मी द रेंज कि मेरा कितने कॉलम्स वगैरह, एंड दिस कॉलम्स गिव्स मी द दिस idea, gives me a rough idea about the columns as well. You can as well copy this out. I'll give you 3 minutes. This is sample. Friends, 4 minutes. 52 I will continue further. So I will, you can copy this down. So
ओके आई विल कंटिन्यू. सो अभी ये देखना हुआ. अभी फॉर एग्जांपल ये आप रीड समझो DFM में बस DOS में देर आर टू कॉलम्स नेम्स एंड बर्थ डेट्स करके. बर्थ डेट्स में यू जस्ट हैव द ईयर. सो इफ आई वांट टू एक्सेस अ पर्टिकुलर खाली मुझे समझो नेम्स करना है. इफ आई राइट द नेम्स हियर सो ये क्या करेगा मुझे ये एक सीरीज बोलते हैं इसको पांडा सीरीज करके. सो इट वाज जस्ट ऐसा सिंपली अगर मैंने नेम्स किया राइट तो मुझे देगा इफ आई पुट द बर्थ डेट्स इधर जस्ट गिव मी अ सीरीज ऑफ थिंग एंड ये देगा एक पर्टिकुलर कॉलम जो भी है उसका देगा और जो भी इंडेक्स है उसका उसके साथ रिटर्न करेगा. सो वी ट्राई टू प्रिंट द टाइप मैंने प्रिंट किया एंड DF इफ आई कॉपी दिस एग्जैक्टली मुझे क्या टाइप आता है देखते हैं. ये क्या किया समझ सीरीज प्रिंट करके दिया. दिस इज द सीरीज अगर मैंने ये किया और फॉर एग्जांपल इफ आई पुट ये सिंगल मैंने सिंगल ब्रैकेट डाला तो गिव मी अ सीरीज. फॉर एग्जांपल इफ आई पुट डबल ब्रैकेट एंड इफ आई पुट नेम्स सो ये क्या करेगा ये मुझे ना एक पांडास का ये रिटर्न करेगा. पांडास का डेटा फ्रेम रिटर्न करेगा. सो इफ आई पुट सिंगल ब्रैकेट्स it will give me a series and if I want to work in ये एक ही column हमेशा series can work only with single column. But if you want to work with multiple columns then you use this double bracket का notation and then it will give you this it will give you a panda का data frame. For example if I print the type of this this will give me a data frame. So this gives me a data frame, this gives me a series. So series एक के लिए एक ही कॉलम वगैरह करना हो और if you want to work with multiple जैसे for example you have DF if I pass all the अभी तो दो ही है मेरे पास. So if I pass names comma you pass the birth dates इसमें एक मल्टीपल मुझे रिटर्न किया बट दिस ऐसा सिंगल में सीरीज में इट्स नॉट and if you want to work with multiple it's recommended that you use this data frame करके use. So you can copy this down and then give you again 3 minutes then we will continue.
आई विल कंटिन्यू. अभी मैंने क्या किया था, नेम्स को मैं बर्थडे स्पेसिफाई किया था, तो मुझे नेम्स को ये बर्थडे उसने रिटर्न किया था. फिर एग्जाम में मुझे उल्टा करना है, मुझे पहले बर्थडे चाहिए फिर नेम चाहिए. तो दैट ऑल्सो इफ आई मेंशन द सीक्वेंस के कॉमा इफ आई पास नेम, मुझे वो पर्टिकुलर सीक्वेंस में इट विल रिटर्न मी. और थ्री कैन स्पेसिफाई द सीक्वेंस, जो भी चाहिए मुझे वो सीक्वेंस में इट विल रिटर्न मी. So Pandas is smart वैसे, it will understand and then simply put it. For example अभी मेरा df किया मैंने, df by default क्या कर रहा है, names को कमा birthdays हैं. अभी मुझे ये b बहुत खटक रहा है, मुझे name change करना है. This b is not big चाहिए मुझे, small नहीं चाहिए. So what I can do is simply I will मैं df करूँगा dot I can access the columns and then I can specify the new this same sequence में names is names only, I don't want to change it. बर्थडेट्स का बी कैपिटल कर दिया एंड आई स्पेसिफाइड अगेन डी एफ करके. एक सेकेंड बनाते हैं, कॉलम से सॉरी इक्वल करना है मुझे. तो डी एफ किया एंड देन कॉलम्स इक्वल टू आई असाइन एट लिस्ट एंड ये देखो तो ये बी कैपिटल हो गया इसका. तो पहले से इट वाज स्मॉल, now if I try to do it columns equal to ये किया तो it return me. So you can change the birth dates करके या कुछ भी name वगैरह change करना तो you can change it. This is simple, just the convention. now अभी ये error देगा क्योंकि अभी वो change हो गया, mutate हो चुका है तो there is nothing. अभी इधर B capital करके आएगा, so I can't do the same thing. So mutate हो चुका है उधर भी. So column in the birth dates here. So by the way ये mutate कर देगा भाई. df columns will directly mutate and original में changes कर देगा. So if you run it again you will get the error because birth dates हो गया change. You can again and again you can access the old one here. So yeah, this is just the renaming. And then if you want to append something, for example if you want to append something, एक काम करो ये copy करो इतना, old syntax लिखता हूँ for you. The birth dates and then I change it and then you print it. So you just copy this out. I'll give it 2 minutes. Then I will start with the append one. So ये छोटा सा ही है, just copy this. I will continue. तो ये ठीक है. अभी मुझे समझो कुछ append करना है इसमें. 0 to 5 है मेरे पास है 6 and I want to append on data. For example if I do this new data equal to I make a data frame. If I write this पहले एक मेरे पास एक अलग से एक data frame बना के रखा है मैंने, समझो. Then I add this code 951 कॉमा किया मैंने, मैं add the columns नहीं columns मैंने ऐड किए, उसमें I will specify same.
names and the birth dates I specify. This out new data का क्या है? Example pd dot data frame. अच्छा F कैपिटल. तो मैंने क्या किया नेम्स ऑफ बर्थ डेट्स करके किया. सो व्हाट आई वांट टू डू इज मेरा जो ये है DF है, DF के अंदर आई वांट टू अपेंड दिस न्यू डेटा. ओके, सो व्हाट आई कैन डू इज समझो मैंने ये किया और DF किया. DF में आई यूज DF डॉट अपेंड एंड इफ आई अपेंड न्यू डेटा एंड इफ आई प्रिंट दिस आउट. तो ये क्या करेगा 0 से 5 तक ठीक है इंडेक्सिंग. अभी इसका इंडेक्सिंग 0 था तो मेरा इंडेक्सिंग हिल गया पूरा. 0 से लेकर 5 था एंड दिस बिकम 0. मेरा रो का जो इंडेक्स था वो. So this got affected. So मैं क्या करूँगा? For example, if I have want to make this, अभी मुझे करना है. I have to reassign. अभी मेरा हिल गया इंडेक्स. I want to reassign ऐसे सीक्वेंस में ही जाना है. तो what I can do is अभी समझो मैंने length of DF किया. So what I'm getting is मेरे पास 7 एलिमेंट्स है करेक्ट. So what I can do is मैंने I equal to ये क्या रेंज किया. रेंज मेरे पास था DF and I DF dot index into if I assign I and print DF. सो मेरा जो सीक्वेंस था 0 1 2 3 4 5 6 का जो सीक्वेंस था दैट गॉट सॉल्व. तो 0 से लेकर 6 तक किया हो गया. कमेंट एंड ये हुआ. सो ये जो मेरा ऊपर का जो सीक्वेंस मिला था दैट सीक्वेंस गॉट सॉर्टेड 0 से लेकर 6. सो यू कॉपी दिस डाउन. देन जो मनस्वी का डाउन था कि मुझे कस्टम देना है दैट ऑल्सो. अगर मैंने इसका आई के बजाय इफ़ यू राइट कस्टम ऐसा ABCDEFG करना है या फिर इफ़ यू राइट द रोमन नंबर्स जैसे इधर लिस्ट ये कुछ भी लिस्ट डाल दो और लिस्ट में यू कैन स्पेसिफाई एक एक करके क्या डालना है. सो ये तो लेंदी हो गया थोड़ा एक एक करके. देयर इज समथिंग नोन एज अप्लाई ऑल्सो डॉट अप्लाई करके. तो दैट आई विल शो यू एंड में थोड़ा कि वो कैसे करता है. तो अभी यू जैसे मैंने रेंज बनाया रेंज आई इक्वल टू आई असाइन कर दिया उसने सीक्वेंस कर दिया. सो आई विल शो यू ये कॉपी करो इतना. आई विल शो यू एन एग्जांपल अगर मैन्युअली करना है तो कैसे मैन्युअली किया तो कैसे ABCD ऐड किया तो एंड देन एंड में आई विल शो यू अगर फंक्शन यूज़ कर तो फंक्शन यूज़ करके हाउ यू कैन असाइन दिस. यू कैन गिव यू अगेन 3 minutes. You can try this out and then I will continue. I'll give you 3 minutes. 11 7 I will continue. हेलो नयन. हाँ तेजस बोल. मैंने जो अभी नेम और नंबर जो मैंने अपेंड किया वो 2 बार प्रिंट हो रहा है फॉर सम रीजन. तूने जुपिटर 2 बार रन किया. वो जो सेल है वो 2 बार तूने रन किया रहेगा. कंट्रोल एंटर करता है ना डॉट अपेंड पे. तो वो जुपिटर क्या करता है मेमोरी में स्टोर करके रखता है. तो अगर तू 2 बार करेगा तो 2 बार अपेंड हो जाएगा. वो 3 बार करेगा 3 बार अपेंड हो जाएगा. तो वो ऐसा ये होता है सेव हो जाता है वो चीज़. तो एक काम कर तुझे चाहिए ना तो तूने जब इनिशियलाइज किया था ना इसको वापस हाँ. इधर से अभी समय इधर से इनिशियलाइज किया तो इधर से इनिशियलाइज करके एक एक करके एंटर करते जा. तो वो सीन नहीं होगा तेरा. कर्नल रिस्टार्ट करके फिर ये करूँ क्या? हाँ कर्नल रिस्टार्ट करके भी या ये रिस्टार्ट एंड रन ऑल कर सकता है. तो दैट इज ऑल्सो ओके फाइन. चलेगा. या सो वो ही इशू था जुपिटर का. इसलिए सम पीपल डोंट प्रेफर जुपिटर ना क्योंकि एक ही बार क्या ना तो मेमोरी में वो वेरिएबल सेव हो जाता है. दैट ओके.
तेजस तेरा इश्यू सॉल्व हुआ? हाँ हो गया। हो गया ना सर? ठीक है, आई विल कंटिन्यू नाउ। सब अभी मैंने इंडेक्स किया था, ये हुआ था। इफ आई डू दिस एग्जांपल, मैं इधर पेस्ट करता हूँ एंड इफ आई प्रिंट दिस, 7 तक था। अगर मुझे ये नहीं चाहिए, आई वांट टू डू कस्टम, ऐसा ए कॉमा बी कॉमा सी का समझो। आई विल राइट इट डाउन, आई विल शो यू अ मेथड एंड में। मेथड अगर डायरेक्ट करना है तो हाउ मैप कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। सो अभी तो आई विल मैन्युअली ऐड एफ कॉमा जी, एक सेकेंड। कितने मिसमैच कितना हो रहा है? 8 एलिमेंट, न्यू वैल्यू हैव 7 एलिमेंट, जी एच। हाँ, सो ये मेरे में भी सेम हो गया अपेंड वाला चीज़। सो इफ़ आई डू द मार्क, मेरे में 2 बार हो गया। सो अभी देखो ए है, ए से लेके एच तक मुझे चाहिए, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डू मैन्युअली ऐसा ए से लेके एच तक आई कैन डू। तो अगर रोमन नंबर चाहिए तो यू कैन ऐसा रोमन नंबर भी करके। सो इफ यू डिफाइन अ फंक्शन ये करके के, तो यू कैन यूज दैट ऑल्सो, दैट आई विल शो यू लेटर वो कैसे करना है। सो या दिस इज वन थिंग। अभी रुको, मुझे पहले से एग्जीक्यूट करने दें। एग्जीक्यूट। हाँ, सो आई गॉट 0 से लेके 6 तक। आई वोंट डू दिस, अभी मुझे इंडेक्स नहीं लाना। सो 0 से लेके 6 तक, एंड इफ आई प्रिंट दिस आउट, व्हाट आई गेट इज 0 से लेके 6 तक है मेरे पास डी है। सो व्हाट यू कैन डू इज, अभी मुझे समझो ये करना है। मुझे ये जो मैंने क्या किया था, डॉट अपेंडिंग करके एक बनाया था न्यू डेटा फ्रेम, उसको मैंने मर्ज किया था दोनों डेटा फ्रेम को विद द सेम नेम्स और बर्थडेज करके था, सेम मैंने मर्ज किया था उसको। सो अगर मुझे ये चाहिए, समझो डी एफ डॉट मुझे ऐड करना है, मेरे पास है डेटा फ्रेम, मुझे खाली एज इट इज डेटा ऐड करना है। सो यू कैन यूज द एल ओ सी, दिस इज लोकेशन करके रहता है, लोकेशन टेक्स द दिस ऑल्सो टेक्स रो कॉमा कॉलम, रो कॉमा कॉलम करता है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई यूज, मुझे समझो 7th, मैंने 7th रो पे मुझे ऐड करना है। सो आई कैन डू व्हाट आई कैन डू, 7 किया मैंने, डी एफ डॉट 7 इक्वल टू आई पुट दिस स्टार्ट किया मैंने, समझो, एंड आई पुट दिस 1973 एंड आई ट्राई टू प्रिंट दिस डी एफ करके। सो व्हाट इट विल डू इज 7 जो था मेरा, एक 7th रो बनाएगा एंड उस पर वो स्टार्क और 1973 करके ऐड कर देगा। सो दिस वे ऑल्सो यू कैन यूज द अपेंड वाला थिंग। सो दिस एल ओ सी इज लोकेशन करके, लोकेशन ये लेता है। तो फिर रो कॉमा कॉलम लेता है बाय डिफॉल्ट। तो रो का जो भी ये रहेगा नेम, इधर 7 है तो ये, और इस पर जो भी नेम, अगर मुझे कॉलम का मैं बताता हूँ आगे एग्जाम्पल, कॉलम के साथ कैसे ये करना है। सो इफ आई वांट टू डू कॉलम, सो कॉमा करके स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कॉलम एंड नेम ऑफ द रो इज बाय डिफॉल्ट मेरा ये इंडेक्स है, तो 7 में स्पेसिफाई करता है। तो लोकेशन हमेशा टेक्स द दिस नेम ऑफ रोज एंड कॉलम। देयर इज ऑल्टरनेटिव वेरिएंट नोन एज आई लॉग, जो मैं आगे बताऊंगा, उसमें कैसा रहता है, वो हमेशा इंडेक्स रहता है, the name of row and column. So that is same, that's the same thing, but it वो integer location देता है, that is हमेशा index ही लेगा। So if I want to access names, मुझे 0 देना पड़ेगा, birthdays के लिए 1 देना पड़ेगा। So we'll explore this, but just letting you know there is a LOC करके and there is a ilog करके variant. So what you can do is simply किया 7 पे you can append this. So you can copy this down if you want. I'll give you again 2 minutes. Then I will नयन continue. हाँ, नयन, यहाँ पे जो एलओसी में 7 पास किया, सो वो यहाँ पे जो रो नंबर का इंडेक्स है वो 7 लिया है ना? 7 वो लिया 7, सो मैंने रो वो का इंडेक्स। 8th रो हो गया ना देन उसके अकॉर्डिंग टू? हाँ हाँ, तो 8 ही है ना मेरा, देख 0 से 6 तक था मेरे पास पहले से। हाँ तो आई वांटेड द 7th, मतलब ये इंडेक्स 0 से चालू होता है इसका, ये नंबर है ना, तो 0 वाला इज 0, 1 इज 1, तो 7 मतलब 8 पे डालना है, मतलब 7th पे मुझे स्टार्ट डालना है। सो दैट्स व्हाई आई हाँ, पुट, तो यहाँ पे रो 8th हो जाएगा बराबर, नहीं ये मतलब मैंने 8th रो पे ऐड, इंसर्ट करना है बट जाएगा वो 7th इंडेक्स पे। हाँ 7th इंडेक्स पे जाएगा या। तो ये एल ओ सी हमेशा ये लेता है, तो ए बी सी डाला रहता ना मैंने, तो एफ एच तक होता तो मैं जी डाल देता, वैसा करता मैं। सो जो भी नया अपेंड करना है ना मुझे, वो मैं स्पेसिफाई कर दूंगा। ओके, या थैंक यू। या श्योर।
आई विल कंटिन्यू। अभी मेरे पास डीएफ है मेरा, डीएफ में व्हाट हैव 7 तक है मेरा इंडेक्स, एंड आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग। मेरे बर्थ डेट से उसमें ईयर्स है मेरे, आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग नोन एज एज करके मुझे ऐड करना है। सो फॉर एग्जांपल अभी देयर आर टू मेथड्स इसमें भी, राइट मेथड 1 ईयर। मेथड 1 में क्या समझोगे, मैंने समझा न्यू बनाया, न्यू में आई क्रिएट द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में पास दो कॉलम्स इक्वल टू एंड आई राइट दिस, पहले तो सेम रखूंगा मैं, नेम्स, birth dates and comma age. Age I want to add new thing. And what I can do is अभी समझो न्यू मैंने प्रिंट किया तो न्यू इज जस्ट दिस, ऐसा कुछ नहीं है, नेम्स बर्थ डेट एज करके खाली बना है, एंड आई वांट टू अपेंड दिस, df इक्वल टू आई विल अपेंड दिस df डॉट अपेंड एंड आई विल पास न्यू एंड आई प्रिंट df। तो इसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट इसमें वो नेम और बर्थ डेट था तो उसने वो देखा, इट इज स्मार्ट, इट अंडरस्टूड कि है तो इसको नहीं करना, एंड एज करके कॉलम ऐड कर दिया उसने। तो एज करके कॉलम ऐड कर दिया, अभी मेरे को कुछ वैल्यूज मैंने डिफाइन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, एज में विल बी प्रिंटिंग नॉट अ नंबर करके, नॉट अ नंबर बिकॉज आई हैव नॉट मेंशन एनीथिंग, तो कुछ भी ऐसा रैंडम नहीं, बाय डिफॉल्ट इट असाइंस नॉट अ नंबर करके। सो दिस इज वन मेथड टू ऐड समथिंग। If I want to another method, if I want to add one more thing, for example, if I want to include वो मेल है कि फीमेल है, so I include a column known as sex and उसमें I specify। अब by default if I write this मेल करके लिख दिया and if I print this out, so वो क्या करेगा, by default जो भी है सबको असाइन कर देगा, मेल 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 करके इट विल असाइन इट, एंड एज मैंने जो नॉट अ नंबर करके था वो मेंशन किया। सो दिस इज द सेकंड मेथड, यू कैन स्पेसिफाई ऐसा मेथड 2 करके you can specify, तो ये ऐड करेंगे भाई। तो दिस आर टू मेथड्स यू टू ऐड कॉलम, मेथड 1 टू ऐड कॉलम और मेथड 2 टू, सो वो बना के यू कैन अपेंड इट और यू कैन यूज द ब्रैकेट में ही बाय डिफॉल्ट, जैसे डिक्शनरी में अपन करते थे, डिक्शनरी में यू ऐड एंड वो एक कॉलम ऐड करेगा अपने। तो दिस आर द टू मेथड्स, यू कैन ट्राई दिस आउट। आई विल गिव यू अगेन 2 minutes 11:17 तक, देन वी विल सी हाउ टू, अब वैल्यूज कैसे फिल करते हैं दैट आई विल शो यू। 11:17 तक यू कैन। I will continue. I hope you're done. तो अभी मैंने जैसे बोला था, LOC हमेशा ये लेता है अपना, कैन टेक द रो का नेम एंड द कॉलम का नेम कैन टेक एंड देन यू कैन परफॉर्म।
तो मेरे पास एज में नॉट अ नंबर एंड सेक्स में देयर इज जेसिका का सेक्स रॉन्ग है. Mary should be female, then Mel should be female. So if I want to change it, so what I can do is अभी समझो df dot if I do loc and I write the पहले तो रो का, तो रो इज दिस. अभी समझो 0 का मुझे चेंज करना है, बॉब का मुझे एज ऐड करना है. तो what I can do is बॉब का किया and then I write the this column का. So this is row comma column name, and if I write equal to 50 and if I make this do multiple things जैसे loc किया मैंने and I want to add अभी 3 comma I want to add this age. So this ये किसका रहेगा? This will add John का age. John का age will be समझो this I am writing random, not birth date से. Birth date का भी I will show you how to add if you want to change. That will like 2021 का minus करके by default can do. So if I write age equal to if I write 17 for example, then df dot loc and you get 6 comma age. Right now I'm writing the age randomly, so don't 2021 से minus करके नहीं करो, but afterwards I will show you how to do that. 1 comma age if I put this 63 and पहले मेरा df ऐसा था and then if I run this and try it out, तो मेरा क्या हुआ, इसने age ऐड कर दिया. एज मेरा जितना जितना मैंने मेंशन किया था, जैसे 0 पे एज मेंशन किया था 50, देन मैंने इधर 63 मेंशन किया था 1 पे, देन 3 पे आई मेंशन दिस 40 वगैरह. तो जितना जितना एक्सेस दी लोकेशन इट वाज एबल टू चेंज. फॉर एग्जांपल एज है, आई वांट टू चेंज, भी मुझे इसका जेसिका का ये चेंज करना है, सेक्स चेंज करना है, एंड दिस मेल शुड बी फीमेल. So if I want to change that, so what I can do is Jessica I want to change, then I want to change Mary ka, and then I want to change Mel ka. So what I can do is simply df dot loc, then I can do is 1 comma by the column name and as female करके किया. So for this I want to do is similarly for female 2 and 4 and I enter df. So it will add ऐसा male, female, ये दो का I mentioned 1, 2 and then I mentioned 4 का. So it entered this thing. So you can mutate the value as a row comma column करके you can change the value if you want to do. So this is one method. You can copy this down. I will show you slicing and then I will show you the example of ilog as well. So yeah, I will give you again 3 minutes to copy it down.
कंटिन्यू। ये था, this was I wanted to cover slicing again. In DataFrame also you can perform the indexing and slicing as well. For example, I said row comma column I had mentioned. For example, you have df ऐसा है, I can just again df मेरा ऐसा है. So if I want a particular location, जैसे मुझे क्या चाहिए, मुझे 4 से लेके 7 किया मैंने mention. So what will happen, मेरा ये करेगा वो, and comma if I mention information. Happen, ये इसने क्या किया, मेरा लिया 4 से लेकर इंक्लूडेड 7 एज वेल. So 4 लिया, it went 5, it went 6, it went 7 as well LOC में. एंड बर्थ डेट्स कोलन मैंने स्पेसिफाई किया. तो पहले कैसा था, नेम्स था, नेम से लेके ये था, मैंने क्या किया, बर्थ डेट्स कोलन लिया तो वो एंड तक चला गया. एज एंड सेक्स ऑल्सो इट इंक्लूडेड एज वेल. सो दैट्स अ थिंग यू हैव दिस करके. बट इसमें ये 7 भी आ गया. तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई मैं 8 2, सो ये इधर तक ही है. सो एग्जाम्पल इफ आई डू 1 कोलन 2 किया मैंने, सो 1 कोलन 2 करके आ गया. इफ मेंशन, सो इट इज व्हाट इट इज डूइंग इज इंक्लूडिंग दैट थिंग एज वेल. अभी वो 8 नहीं हुआ क्योंकि 7 तक ही था, तो बाय डिफॉल्ट वो लास्ट का ये स्मार्ट कर दिया. बट एलओसी में क्या हो रहा है, इट इज इंक्लूडिंग फर्स्ट स्टार्ट करके कोलन किया, तो इट इज इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो, लास्ट वाला इंडेक्स थिंग. तो क्या, और ये उधर जिधर स्टॉप करना है उधर मेंशन है, तो इट वाज स्टॉप फ्रॉम हियर. एंड वर्डेट्स कोलन किया तो इट वेंट फ्रॉम एंड तक इट वेंट. So if I समझो for example if I mention the step size is if I try to mention, so it will jump. So birth date किया, then I mention the step size and jump. So this is the normal this thing, slicing वाला thing, but ये last वाला भी include कर रहा है. So make sure you know that down. So df dot location, you can mention the, again I will write row comma column, you can write it, you can index it ऐसे loc करके. So this is one thing. Then you can do this also. If I समझो मैंने ये किया df dot loc किया, and I do the df dot index I mentioned. Df dot index में what I can do is I can go and this I mention the column जो मुझे चाहिए. So if I mention names, print it out. So ये it will work normally as expected. इसमें 0 1 2 तक expect करा तो it will make sure कि that performs as expected, and if mention the name of the column that you want. You can use this also for slicing. So write it down. Data framing, indexing, and slicing. Data frame and you can do this. The function में you can mention this. So yeah, you can experiment ये दोनों LOC में, and df dot index करके भी you can experiment. You can try it out as well. Again, give a few minutes, then I will continue. Then I will cover the iLog wala part. हाँ शुक्रिया.
मैंने ना रोज को रीनेम करके ABCD कर दिया, मतलब अल्फ़ाबेट यूज़ किया, तो हाँ, हाँ। अभी स्लाइसिंग वर्क नहीं कर रहा। एरर दे रहा है कुछ? हाँ, ये इंडेक्स ट्राई करके देख। df डॉट इंडेक्स ट्राई करके। ओके। अभी भी एरर थ्रो कर रहा है। एक काम आई लॉग बता दो। ये देख, इसमें सीन क्या रहता है, टेक्स्ट और दिस अपना जो नेम रहता है ना, नेम रहता है जैसे कॉलम्स था, कॉलम्स में ये ना 0 1 मैंने वो स्पेसिफाई किया था इधर बर्थडेट्स कोलन करके, एंड इट वेंट टू द एंड। सो समटाइम्स एलओसी में दैट्स व्हाई नॉट प्रेफर कि ये एक एक करके इट हैपेंस। फॉर एग्जांपल ऐसा बर्थडेट्स कोलन किया तो इट वेंट ऐसा ये पर्टिकुलर बर्थडेट से लेके एंड तक गया। So if you specify you in LOC में क्या करना पड़ता है, you have to specify the name of the rows and column. So इससे अच्छा I will show you the ILOC, that's a better word. तो ILOC चलना चाहिए सब में. Let me try. So df dot ILOC किया मैंने सब, df मैंने print किया. And if I perform the ILOC करके ILOC में specify this. I've mentioned this. समझो colon -1 किया था. So it printed in reverse, and if I've mentioned the column, let's say if I mention 0:4, so Shubhalakshmi, you can try this out. ilog use करके देखें ना, ilog में you perform, you pass the index directly, so this should work for you. Yes, this is working. So तेरा इसमें भी अगर तू LOC में भी if you try to this ना, अगर इसके बदले you तूने ABC डाला तो एक कोलन करके ट्राई करके देख, it might work, it might not work, I'm not sure कि इस पे रोज पे this indexing will work or not. तो ट्राई करके बता मुझे कैसा आएगा। तेरा पहला ए से चालू हो रहा है ना शुभलक्ष्मी? हाँ, A से स्टार्ट हो गया। एक कोलन करके देख तेरा चल रहा है क्या इन द रोज वाला पार्ट, एंड देन कॉलम तुझे ब्लैंक रखना तो रखना। हाँ, अभी वर्क कर रहा है। हाँ, सो यू हैव टू ऑलवेज स्पेसिफाई द रो का जो नेम है ना वो इन ILOC में, LOC में। सो इट ऑलवेज टेक्स द नेम नॉट द इंडेक्स। अभी बाय डिफॉल्ट अपना 0 1 2 था ना, तो दैट्स व्हाई, लेकिन अपन ने किया था आई, सो मैं अपन ने 0 से लेके एंड तक दिया था, दैट्स व्हाई दिस इंडेक्स वर्क, क्योंकि मेरा रो का भी इंडेक्सिंग वही है, बट इन योर केस इट वाज ए से, सो उसमें स्टेप साइज का भी कभी कोई सीन होता है कैसा करना है, तो इट माइट वर्क, इट माइट नॉट वर्क समटाइम। तो यूजुअली यू ऐसा अलग रहता है ना रो का नाम, सो ILOC इज मोर प्रेफर्ड बिकॉज ILOC अलाउड यू टू इंटीजर लोकेशन में, इट अलाउज यू टू परफॉर्म। सो जैसे मैंने अभी कोलन -1 किया था, सो ये क्या मेरा रो को उल्टा प्रिंट करता है, 7 से लेके 0 तक किया, एंड देन व्हाट आई ये मेरा ये था, मुझे 0 से लेके 4 तक ही चाहिए था, तो अभी मैं खाली एक सेकेंड में प्रिंट किया फिर, तो ये क्या था 0 1 2 3, सो बाय डिफॉल्ट अभी ये है, ये अभी समझो if I put 1, प्रिंट इट आउट, तो ये क्या किया इसने 0 से लेके 1 तो एक्सक्लूसिव हो गया मेरा, तो खाली नेम्स इसने प्रिंट किया है, पुट 2 ILOC में। सो ILOC क्या करता है इसमें, यू डोंट हैव टू, यू जस्ट हैव टू ILOC में यू हैव टू जस्ट मेंशन द इंटीजर इंडेक्सिंग विद फ्रॉम दिस फॉर्म इंटीजर पॉइंटर फ्रॉम। सो इंडेक्सिंग हमें इंटीजर पॉइंटर से होता है, क्योंकि जब अभी जैसे शुभलक्ष्मी का सीन हुआ था,
शी हैड ABCD करके था उसका रोज का थिंग. So indexing might not work properly in LOC में. So LOC में may be slicing में थोड़ा कभी-कभी सीन होता है. So you perform the iLoc वाला thing. So index in integer. So you can perform different kind of slicing. ठीक है experiment जो भी list में था ना, जैसे column this is for row and this is for column. So you can experiment it out. जैसे अभी मैंने खाली इधर मैंने ये नहीं mention किया. I don't mention the column वाला part. तो ये क्या करेगा by default it will print in everything and 7 से लेके 0. If I pass the optional parameter that is my column and I want to see only the first two, so I will get name and birthday. If I pass 3 you can this. So you can play around with this iLog वाला part thing and this will work even if you have the this thing ulta. So this should work. Index and integer form. I will give you 5 minutes. You can perform as a different kind of operation वगैरह. नयन, ये जो iLoc में सेकंड पैरामीटर था ना 0:3, सो वो कैसे इंडिकेट होता है? अभी देख मैं बता दूँ. अभी ये देख मेरा ये मैंने प्रिंट किया तो नेम्स 0 हो जाएगा तेरा. जो भी पहला कॉलम है ना दैट विल बी 0 इंडेक्स, बर्थडेज विल बी फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स एंड थर्ड इंडेक्स. तो मैंने 0:3 किया ना तो वो क्या 0 उठाया, 1 उठाया, 2 उठाया एंड अभी मैंने इसको किया प्रिंट. तो इग्नोर द लास्ट वाला कॉलम बाय डिफॉल्ट जैसे अपना लिस्ट में होता है. तो अभी मैंने इसको वापस प्रिंट किया तो 0 द फर्स्ट कॉलम जो भी प्रिंट होता है ना दिस विल बी 0, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3. कॉलम में रोज में भी इफ ABCD तो 0 1 2 3 4 5 6 करके वो असाइन कर देगा एंड यू कैन परफॉर्म दिस. ओके, थैंक यू. Yeah, sure. So yeah, you can perform ऐसा experiment करें. iLog is I personally prefer iLog more than the LOC वाला thing because LOC में बहुत टाइम मुझे भी एरर फेंकता है वो LOC में एंड वो इंडेक्सिंग बहुत ये हो जाता है. मैं कोलन कोलन अगर 2 करना है मुझे स्टेप साइज डालना है तो इट गेट्स बिट ट्रिकी. मैं इसमें कैसे करूँ? यू कैन डू दिस ए में भी इफ यू कोलन करके डाला एंड इफ यू पुट दिस ऐसा स्टेप साइज हो गया तो इट शुड वर्क आइडियली. But sometimes it gets tricky, so you prefer the iLoc वाला part. So that depends upon the user as well. हाँ, अभी ना नयन मैंने LOC का यूज़ किया था तो उसमें मेरे पास रो है फ्रॉम 0 to 9. ओके, सो LOC में मैंने 0:9 डाला तो उसने बताया एरर आया कि इट कैनॉट डू स्लाइस इंडेक्सिंग ऑन इंडेक्स विद दिस इंडेक्सेस. सो तेरा वो तो होना चाहिए था ना. 0 से लेके कैसे है तेरा? 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 9. 9 तक है. तो तूने कॉलम हाँ. स्पेसिफाई किया है? कॉलम एक सेकेंड, यहाँ पे df.loc लिखा, देन वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0:9 कॉमा जो मेरा कॉलम का नेम है वो कोलन. कैन यू ये स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं क्या तो मुझे समझेगा तेरा एरर क्यों आ रहा है. स्क्रीन तेरा कोड के साथ डालना है, एरर भी डालना कोड भी डालना. हाँ स्क्रीनशॉट में ठीक है, चले. कमेंट बॉक्स में.
अब नयन वो सॉल्व हो गया, वो मेरे हो गया मिस्टेक था। कंटिन्यू, इसका बाकी रहेगा तो लेट मी नो। कंटिन्यू। तो अभी मैं करता हूँ DF में। मैंने DF किया, DF में आई हैव 0 से लेकर 7, मतलब मैं आई हैव 8 एलिमेंट्स में। तो अभी मैं समझे एक और बनाता हूँ, माई DF इक्वल टू DF डॉट हेड करता हूँ। हेड किया, हेड गिव्स मी बाय डिफॉल्ट 5 एलिमेंट्स देता है मुझे। तो मैंने एक DF डॉट हेड किया, रिटर्न्स में पहले 5 एलिमेंट्स, उसको मैंने माई DF में स्टोर किया, एंड प्रिंट माई DF it will give me the first 5 elements, ये 0 से लेकर 4 तक। एंड व्हाट आई कैन डू इज, अभी समझो मैंने ये किया, इफ आई पास, समझो मेरे पास 5 एलिमेंट्स एंड आई पास ऐसा बुलियन करके, सो फॉर एग्जांपल आई पास ट्रू फॉल्स in 2, then I pass 2, and then I pass false. I have 5 this 5 and I pass 5 boolean का index है ऐसा, true false true false, and if I print it up, so वो क्या करेगा, जैसे मैंने अभी 0 पे था, it was true, फर्स्ट इंडेक्स पे तो फॉल्स, फर्स्ट को उसने इग्नोर मार दिया, सेकंड पे इट वाज 2, तो सेकंड पे शोड मी द दिस रो शो किया, थर्ड पे इफ आई हैड 2 इट शोड, एंड फोर्थ पे इट हैड फॉल्स, सो इट फॉल्स। सो ऐसे दिस इज टू मैन्युअली है। आगे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कि वाई द यू कैन परफॉर्म एनी लॉजिक, समझो मुझे खाली ये चाहिए, एज इज ग्रेटर 50 करके चाहिए, इफ आई वांट सेक्स ओनली फॉर मेल, not the female ones, then I can perform such operation, and वो जो भी वो इधर मैं लिखता हूँ, इधर कंडीशन लिखता हूँ, and then I will show it to you live example, but I wanted to explain logic first. तो ऐसा मैंने अगर इंडेक्सिंग किया है, ट्रू फॉल्स करके किया, तो इट विल इग्नोर दैट इंडेक्स, जो भी रोज का इंडेक्स है, दैट इट विल इग्नोर। सो अभी मैंने समझ इसको पहले को भी फॉल्स कर दिया, सो इट विल इग्नोर द फर्स्ट वाला ऐसा, तो 0 वाला जो मेरा था रो वो इग्नोर कर दिया। तो यू कैन डू दिस ऑल्सो लॉजिक में। इफ आई एग्जाम्पल, इफ आई हैव द एज फिल्टर, लेट मी प्रिंट DF पहले, you I will ये कमेंट बॉक्स में डालते हैं, you can copy this one. समझो DF है मेरा, DF पे I want to put an age filter करके, I want to do something underscore filter. If I do this DF और फिर I mention age I mention as 30, and if I ये क्या करेगा, अभी मेरा मैं वापस से DF प्रिंट करके देता हूँ, मेरा एज है, एज ग्रेटर देन 30 है, सो द फर्स्ट में है 32, सेकंड में ये नॉट अ नंबर है, मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो इट विल बाय डिफॉल्ट गिव मी कंडीशन में फॉल्स दे दिया। सो मेरा 40 इज ग्रेटर, यस, नॉट अ नंबर, कुछ नहीं कर सकता मैं उसका। फिफ्थ पे गिव मी फॉल्स बिकॉज 7 इज लेस, 6 गिव मी 2 एंड 7 गिव मी फॉल्स। तो ये मुझे क्या किया, इसने ये किया, रिटर्न मी समथिंग, ट्रू फॉल्स वगैरह में। एंड इफ आई डू दिस DF, I do age filter, ये क्या करेगा, मुझे खाली जिसके भी एज ग्रेटर देन 30 है ना, वही रिटर्न करेगा। सो दिस इंटरनली यूजेस दिस लॉजिक, ये जो मैंने लॉजिक मेंशन किया था, इवन आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे ये चीज़। तो अगर मैंने ये लॉजिक इधर किया तो इट हेल्प्स मी फिल्टर आउट, तो मुझे जितना भी समझे एज ग्रेटर 30 है वही करना है, तो आई कैन जस्ट प्रिंट देम एज ग्रेटर देन 30 वाला है। आई कैन डू दिस, और यू कैन सिंपली पुट ईयर इधर, DF में ऑल्टरनेटिव सिंटैक्स इधर ही मैं डाल दिया, DF के अंदर DF आई मेंशन एज and I mentioned greater than 30. So मुझे या तो I can assign it a variable and then pass it, so you can directly write the condition here as well. So मैंने less than 30 किया, so 17 is the only and not a number को it won't consider, bound देगा उसको. So this are the two operations that you can perform. So if copy this down and give it 2 minutes, you can try different condition. मैं एक और ये करता हूँ, और एक दो एग्जांपल देके I will continue. I will give you 2 minutes to copy this down.
I will continue. एक और एग्जाम्पल देना था मुझे. Some examples I want only the people who are male, and I want the age of people who are greater than this. मैं ये करता हूँ. I write one condition पहले. Print it out. Df I print it out. Then I run the condition. Df है तो age. I write the condition. अभी मुझे क्या चाहिए? Only male. I enclose it in a bracket. I write the ampersand. I again enclose the and greater than 30, and I enclose this. क्या करेगा? Give me only the people who are male and जिनका भी age 30 से ज़्यादा है. So you can ऐसा nest करके you can write multiple condition. And when you people have DBMS, third year वालों को तो हो गया रहेगा because they're in fourth year. So fifth sem में you have DBMS. So DBMS में भी in SQL you write ऐसा nested वगैरह query. So this is kind of similar to ऐसा you can say Pandas के अंदर you can have the SQL वाला write. So you can write अलग conditions in this. So these are the few ऐसा मैंने बताया. And there is one more thing. Example if I have DF में I have ऐसा इसमें not a number करके I have values करके. So if I put समझो age में I have not a value number करके value. So if I put F age में if I do this is dot क्या मैंने जितने भी रहेंगे ना मेरे पास एज में जिनका एज नहीं है नॉट अ नंबर है. इफ आई वांट टू नो किनका नॉट अ नंबर है, सो आई विल डू इज नन क्या बताता है मुझे ये रिटर्न करेगा. इफ इट इज टू है नॉट अ नंबर है इस पे, तो इट विल रिटर्न टू ऑल्स फॉल्स. सिंपल लॉजिक. सो ये इक्वल टू ट्रू वाला कंडीशन जिधर रहते हैं. अभी फॉर एग्जांपल जिनका नहीं है राइट फॉल्स, तो एज में जिनका भी नॉट अ नंबर नहीं है वो आएगा ही नहीं मेरे पास. सो इज नल कैन बी यूज इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई किया था मेरा, जैसा मैंने इधर बोला था. I had mentioned कि you have to handling of missing data है जो मैंने mention किया था, that you can do and data cleansing वगैरह. So not a number का you can perform, you can average out करके you want to insert it or what you want to do, it depends on your logic. So this is a very generic example, but it might help you. So you can copy this down. अब पारस तुझे पारस और Ruchita. Yeah. So you want to take the Yeah. वाला thing, you can do this right now. I will give after this you can take a break. उसके इंट्रो वाला thing हो जाने दो and you can copy this down. If I have any doubt I will be there till 12. Also you can take a break. Yeah. Guys पे सब लोग कैंप ज्वाइन कर लो ना आपने. सब लोग प्लीज कर लो. So yeah. So I have switched it on मेरा कैमरा. Yeah. You can take. बाकी भी कोई कर लो. पारस तो खुद कर ले पहले. हाँ कर रहा हूँ. एक मिनट. और कौन का है? कौन तो यार मैं अकेला नहीं रहा. ओहो. ये क्या इसके रिपोर्ट में आना है क्या? हाँ ठीक है. अच्छा यार एक बार तू ये स्टॉप कर देना. क्या स्टॉप करूँ? अच्छा स्क्रीन शेयरिंग फिर वो. हाँ क्या ओके. स्टॉप क्या? या अब आ गया. देख. अच्छा एक सेकंड. या so you can delete it. But I will give you a break. We can continue after that. अच्छा लग रहा है शक्ल देख के थोड़ा. कॉलेज में होता तो ज़्यादा मजा आएगा. डाउट्स हल करने में थोड़ा ईजी पड़ता है. तो कोई समझता नहीं है किसका क्या डाउट आ रहा है. तेरा शक्ल देख के जाते हो. ठीक है आज लास्ट सेशन रहेगा अपना. आई विल टेक वन मोर सेशन इफ यू वांट. जो भी मैं प्रॉब्लम्स दूंगा उस पर. एंड कुछ अगर पांडस तो अभी रफ ही हुआ है.
इतना डिटेल नहीं हुआ, तो अगर पांडास में और डिटेल चाहिए रहेगा तो आई कैन कवर अ केस स्टडी ऑल्सो। अगर शेयर योर वीडियो, वो देखो समझेगा ना। एंड देन मैं अभी तो करो, तुम लोग का मशीन लर्निंग होगा कल से चालू, सो उसमें ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अगर कुछ डाउट वगैरह रहेगा फॉर माई साइड या इवन एम में कुछ डाउट हो, इफ आई कैन हेल्प आई विल ट्राई टू हेल्प। एंड तुम लोग का असाइनमेंट्स वगैरह मैं देते जाऊँगा, तो इफ़ यू वांट आई कैन हैव एक ऐसा छोटा सा सेशन रखूँगा, जिसको भी डाउट रहेगा ओनली दोज पीपल कैन कम इफ यू वांट। So yeah, Okay. तेरा screenshot Okay, वाला हाँ, done, 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 done. so Yeah, we can thank you finish it guys, up. thank you. Yeah, sure. Yeah, thank you guys. You can take a break if you want. कुछ doubt नहीं रहेगा तो you can leave. And yeah, मैं भी मेरा कैमरा बंद कर देता। Hi Jay. So yeah, अभी किसी को कुछ डाउट है तो you can stay or else you can leave if you want. Then I will continue after break. And then और भी कुछ फ्यूचर में डाउट रहेगा तो यू कैन शेयर वैसा इस पे व्हाट्सएप वगैरह पे कुछ रहेगा तो यू कैन आस्क मी आफ्टर ब्रेक। 1 ही घंटा लूँगा एज यूजुअल, बट आई डोंट प्रेफर दोस्त ज़्यादा लूँगा। और पारस वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग इफ यू वांट, स्टॉप द रिकॉर्डिंग इफ यू वांट, एंड मैं ये करता हूँ अपना